is that we are going to start talking about what this fashion industry is about and what are we looking at when we are entering the business of fashion or the fashion industry per se. Is this visible to all? Because it is now to me also. Yes, ma'am. Okay. थोड़ा सा ये पीछे जा रहा है, I think. Ashok sir? I don't see a slide happening. आपके यहाँ slide चल रहा है क्या? I've moved on to the next slide. Slides तो नहीं है मैम, main screen है जो आपका PPT है, PPT से show हो रहा है. हाँ, so that's what I'm saying. I've started here, but I cannot see it on my phone either. What do I do? Oh, wait, ma'am, let me come in that situation. Let me try and share my screen because I do have your presentation. Just 1 second. मुझे लग रहा है ये screen उस पे नहीं जा रहा है, full screen पे नहीं हो रहा है. Ma'am, could you allow me to share? Sure. 1 second. जी. So we can go on a full screen share. Okay. Yeah, it's already in full screen, ma'am. Anji, saw that. Now it's being seen from my end. पहले दिख नहीं रहा था मेरे यहाँ पे. Okay, Ji. So, first question first. Why do we want to learn fashion design, and what are we really looking at doing when we are, wanting to start a career in fashion? So you'll have to move to the next. So the question why is one, because you want to make a difference, which means you are somebody. See, कि फैशन डिजाइन है, फैशन डिजाइन के लिए हमारे को आर्टिस्टिक होने की जरूरत है, हमारे को क्रिएटिविटी की जरूरत है, but that's really not what it should be. The idea is, for being a fashion designer, the idea would be to make sure that your garments fit perfect and make the other person look perfect. Okay, so in our classrooms, we say that fashion designers are the ones who will camouflage all the flaws in your body and highlight all the good parts of your features. Okay, so it is science, it's logic, it's mathematics, it's design, it's creativity, it's everything encompassed into one. So agar hum bolte ji hum bahut creative honge, only then we can get into fashion design, it's a myth. I cannot draw and I can't be a fashion designer, that's a myth. I say I'm very good in drawing, and that is the reason why I want to be a fashion designer, that's also a myth. Reason being, हम लोग कभी भी किसी डिजाइनर्स के पास जाते हैं, do we ever say we go to a Versace showroom and do we ever say, oh please bring Versace here, or tell them to show me his sketches, only then I will buy something? We don't do that. Why? Because the final product that is being sold in the market is what matters. पीछे आपने डिजाइन किया, sketching किया, कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया, it does not matter. What matters is, are you able to put that thought of yours on that garment and made it perfect? So you have to be the one who believes in themselves and they want to make a difference in the market. When I say in the market also, हम लोग बहुत creative, हम impress हो जाते हैं कि जी ramp shows हैं, fashion shows हैं, brilliant work, creative, etc. But you and I, we don't really wear those clothes. जब वो मार्केट में आते हैं तो वही रेगुलर शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्तीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट्स व्हाट यू बाय. नाउ वो बाय करने के लिए योर फिट्स, योर गारमेंट डिजाइंस, योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑल दैट मैटर्स. अगर आपकी मास्टरी उसमें है, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, यू want to be different, and the only way you can be different is when the fits are good and you're enhancing somebody who's wearing it. That's what is when you want to make a difference. Then you want to be a leader.
and explore out of your comfort zone. Like I said, भाई मेरे को तो drawing नहीं आती है, मैं नहीं कुछ कर सकूंगी या कर सकूंगा. मुझे drawing बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं कर सकूंगा, but जब मेरे को business करना होगा तो मुझे business समझ नहीं आएगा. So you need to be self-motivated, you need to lead, and anybody who wants to start a business in fashion or any business for that matter, you need to be a leader from day one. भले ही आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले हो, बट आप लीडर की तरह चलोगे क्योंकि आपने काम तो बाकियों से कराना है. सो वो काम कराना आना भी बहुत जरूरी है. The next is you're passionate about design and fashion and you want to build your own name in that. So that's one. Another is, and of course, make a mark. जितना अच्छा product develop करोगे, जितना अच्छा product market में लाओगे, उतना आपका नाम बढ़ेगा. So fame comes much later. To begin with, focus on the very nuances of what you really are building up, which includes the business and the design. So it has to marry between the two and then take it to the consumer. So the concept here will be right from the idea to the consumer, everything in between. Okay. Then your goal is to recognize the opportunities. Of course, अगर I give this example a lot. Okay, so supposing घर पे शादी है और हम लोग जा रहे हैं, भाई हमको लहंगा खरीदना है. अब हम वो लहंगा खरीदने, या तो बहुत पैसे हैं, हम 40 लाख का मनीष मल्होत्रा का या सब्यसाची का एक अच्छा सा लहंगा खरीदेंगे. अगर इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, maybe we'll come down to a category B designer and we say okay चलो हम लोग 5-6 लाख 10 लाख में ले लेंगे. अगर वो भी नहीं होता है, we have another category C designers which we'll say कि okay इसको हम लोग 4 लाख में ले लेंगे. वो भी नहीं होगा तो हम लोग we'll go to the stores which is like CTC Plaza and all of those places. हम वहां पे जाएंगे, वहां पे हमारे को 1-2 लाख में भी मिल जाएगा, 80,000 में भी मिल जाएगा. हमारे को वो भी नहीं चाहिए, देन वी गो टू चांदनी चौक. चांदनी चौक में मुझे मनीष मल्होत्रा का रेप्लिका 4,000 में मिल जाएगा. So you see, I have a competition at every level. Here we have to see where my opportunity is. So therefore, अगर मुझे bridal लहंगे बनाने हैं तो मेरे को उधर एक चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक opportunity, एक requirement of the market, the gap. Only then I will be able to succeed. Otherwise, I'm not saying you won't succeed, but it'll take a long time. अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप वो अपॉर्चुनिटीज देखेंगे जो कि मार्केट में नहीं है एंड पीपल वांट. क्योंकि हम लोग सारा दिन फैशन शोज में सिर्फ लहंगे और सिर्फ ब्राइडल वेयर देखते हैं, हमारे को ग्लैमर वहीं देखता है, तो हमारे दिमाग में होता है that we will only do become a designer for wedding wear. So well, you'll have to think again because there are other opportunities. So your goal is to recognize that opportunity and then work. Another very common example that I give in class, अगर मेरे पास एक रैम्प शो चल रहा है and there are the paparazzi, the media is there, और वहां पे एक मनीष मल्होत्रा का गारमेंट चल रहा है और आपका भी साथ में जाएगा, but your garment is not for that, but there's a dog walking wearing your created designed garment. अगले दिन headlines में आप ही का garment होगा, not Manish Malhotra. Why? Because you have done something different. Okay, so that's what recognizing your opportunities is. And then your dream is to make something nice. Now बहुत सारे लोगों ने chat पे बोला, it's creativity, it's putting your thoughts on your garment, etc. So it is your dream to create something beautiful. So and be different from the rest of the designers and rest of the world. Next slide, sir. So what faculty will I be trained under? So that's another question. Next slide, please. So we at ICF, we have a phenomenon that we, a philosophy, a phenomenon that we talk about is आपको जो चीज सीखना है वो जब तक आप हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं करेंगे, हाथ से प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, आप किताबों में नोट्स पढ़ पढ़ के कभी नहीं कर पाएंगे. So we emphasize on experiential learning, which means
everything that you work on. So even if you are making a design, that design has to start with, of course, putting your thoughts on paper. So sketching, illustrations, it's required. Initially, when I had said that we are not supposed to be great artists to create, but हमारे को उतना डिजाइन करना आना चाहिए कि जब वो आपका स्केच एक कारीगर के पास जाएगा, उसको वो पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए. So that entire thought process is put exactly on paper for your karigars to follow. Okay, so when you are at ICF, we have an entire lab and an entire setup, which is like a boutique setup where you'll have karigars working, you'll have a machine embroidery guy, you'll have a hand embroidery person, आपकी printing भी होती है वहाँ पे, tailor masters भी बैठते हैं. So everybody, the whole shop floor is there. So which means when you actually come into the college and you start working, you will have to work with these karigars. So that's a real life experience that you will get. Also, the faculty that comes to you are from the industry. So we don't encourage too many of, so-called just academicians. We are all, most of 90% of our faculty members are from the industry. So supposing koi aapko textile sikha rahe hai, so she is a textile designer outside in the industry. Somebody who's teaching you merchandising is a merchandiser. Somebody who's teaching you design is a designer. So everybody is working. So what happens is, आपको कुछ किताबी पढ़ाई नहीं सिखाई जाएगी, आपको प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिनेरियोज में पढ़ाया जाएगा कि मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में क्या लैंग्वेज यूज होता है, मार्केट में हमको नेगोशिएशंस कैसे करना होता है, हमारे को सोर्सिंग कहाँ से करना है. So everybody will know how to do it. So we have a panel of designers. They also come across and they also talk to you. They come and take sessions with you. So ICF के बच्चे अगर फोन उठाते हैं और किसी डिजाइनर को फोन करते हैं, तो most of the times the designer will know that student because they've been interacting with them. So that's one experiential learning that you will get here, and specifically with all the experts of the industry. So हम लोग कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे आपको इंडस्ट्री से इंटरफेस, इंडस्ट्री की नेटवर्किंग करने में मुश्किल हो. So आपके लिए, to be successful in the industry, you have to know everybody in the industry, and while you're in ICF, you will get to know everybody and start building up your network. Next slide, sir. Okay, so now what will you learn at ICF? So here are a couple of topics that you will be learning. So next slide. So diploma in fashion design will have these so go back. So you'll have fashion design, you learn how to design, you learn garment construction. So please understand, जब हम garment construction बोलते हैं, सिर्फ stitching और रेगुलर टेलर की स्टिचिंग होती है, वो गारमेंट कंस्ट्रक्शन हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज गारमेंट कंस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई सेड राइट फिट, अब हम लोग अगर सपोजिंग ज़ारा जाते हैं, आई होप एवरीबडी नोज ज़ारा, राइट? सो अगर हम ज़ारा पे जाते हैं या H&M पे जाते हैं, H&M में कितने कपड़े हैं और उनमें से कलर्स आपको कितने मिलेंगे, या आपको क्रिएटिव, अटरली क्रिएटिव डिजाइन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? You won't, right? Because the quality and the fit and the product is important. अगर आपका गारमेंट का फिट सही है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. So that's what you will learn. Then visual merchandising is another subject that you learn. Visual merchandising is basically how the store is set up. Okay, so जैसे विंडोज होते हैं, हर सीजन में बदलते हैं, आपका स्टोर का प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे होता है. सो ऑल दैट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग. नाउ अगेन अ स्मॉल लिटिल एग्जांपल, हम लोग जब किसी स्टोर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है? मे बी एक शेल्फ होगा जहाँ पे कलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, मे बी एक मैनिक्विन होगा जहाँ पे उन्होंने एक लुक क्रिएट करके रखा होगा,
सो इसका मतलब ये होता है कि जब एक कंज्यूमर स्टोर के अंदर आता है तो वो पहला उसको क्या चीज देखना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पड़ी होनी चाहिए, आई लेवल पे है या रीच पे है या नहीं है, या प्रोडक्ट पूरा उसका प्रोडक्ट लाइन शो करना है तो कैसे शो करना है. Also, sometimes, I'm sure all the men folk here will realize this. Men folk don't have too many options. और उनमें पेशेंस नहीं होता है शॉपिंग का. सो अगर आप किसी भी मेन स्टोर में जाते हैं तो यू विल ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन ऑफ अ प्लेस वेयर दे पुट ऑल ऑफ एवरीथिंग कोऑर्डिनेटेड. उनके शर्ट्स होंगे, पैंट्स होंगे, बेल्ट्स होंगे, टाइज होंगे, जैकेट्स होंगे, शूज होंगे, सॉक्स होंगे, कफलिंग्स होंगे, सब कुछ एक साथ लगा के रखा होता है. और वो इसलिए रखा होता है क्योंकि अ पर्सन will go, let's say a guy is walking into a store and saying मेरे पास आज शर्ट लेके जाना है मुझे, तो वो जब वो शर्ट उठा के रखेंगे, बट देन अगर एक पूरा उसके सामने एक मैनिक्विन पे लुक है तो वो सोचेगा, देखेगा ये अच्छा लग रहा है, देन he'll say अच्छा मुझे ये वाला पैंट भी दिखा दो, मुझे ये वाला जैकेट भी दिखा दो, मुझे ये भी दिखा दो. So it, visual merchandising makes it easier for the customer to buy a product, and it is easier or important for a retail store to sell the product. Similarly, जब हम लोग कैश काउंटर्स पे जाते हैं, जब हम लोग कैश काउंटर्स पे जाएंगे तो वहां पे हम लाइन में खड़े होते हैं. अब वहां पे छोटे स्क्रंचीज होंगे, कोई की चेन्स होंगे, कोई चीज, छोटी छोटी चीजें रखी होती है कैश काउंटर के पास ना. वो कैश काउंटर के पास जो चीजें पड़ी हैं वो चाहिए होती है इम्पल्स बाइंग के लिए. Now, I don't go to a store, a big store, to buy a scrunchie, but मैं वहाँ खड़ी हूँ, wait कर रही हूँ, so I will pick it up. So that's called impulse shopping. So visual merchandising will teach you all of that, and it is very important even when you are creating your own stores. What kind of lighting, what kind of displays, what kind of flow of a person. So all that will be taught. Then elements and principles of design. Now this includes colors. It includes the lines, the silhouettes. Like I said, आपको जितने flaws हैं body के वो camouflage करने हैं. आपको जितने good features हैं उनको highlight करना है. अगर कोई short है तो उसको tall कैसे करना है दिखने में, visual effects of it. तो वो चीज आप elements and principles में सीखेंगे. Fashion illustration is making those croquis designs, like I said. आप फैशन फिगर्स बनाना सीखेंगे, उस पे ड्रेप्स करेंगे, आप देखेंगे, आप सीखेंगे कौन सा फैब्रिक है, उसका ड्रेप कैसा आएगा. तो एक बॉडी फिगर बनाते हैं, उसके ऊपर हम जब वो फैब्रिक को ड्रेप करते हैं तो हमें दिखता है कि ये जब बनेगा तो इसको इस तरह का लुक आएगा. सो दैट इज व्हाई वी डू फैशन इलस्ट्रेशन. पैटर्न मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ गारमेंट कंस्ट्रक्शन. पैटर्न अगर सही है तो आपका फिट कभी गलत नहीं होगा. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग टू बी पुटिंग इन सिटिंग देयर एंड मेकिंग पैटर्न्स, बट as a designer you must know how your patterns are done, because pattern will give you the right fit. Okay, then you'll also learn surface ornamentation. Now surface ornamentation matlab embroidery hai, different types of printing hai, digital, hand printing, block printing, dabu, etc., etc. So all those printings also will be taught to you. Now this is in the scenario if you are just doing a diploma program. If you are looking at a fashion entrepreneurship program, then there will be a lot more, which is like including business and sales and entrepreneurship, marketing, digital marketing, consumer behavior. So there will be an entire brand management. So all of that will be encompassed in that, also retail management as well. So that will be when you are looking at a program in fashion entrepreneurship or a bachelor's degree, which of course if you have any query we will be happy to help you there. Next slide, sir. So again, what are the advantages at ICF? Like I said, it's an industry integrated program. Remember I told you you have to be an opportunist. You want to look for opportunities. Opportunities tab hongi jab koi gap hota hai. So
ये जितने हमारे प्रोग्राम्स हमने क्रिएट किए हैं, जो डेवलप किए हैं, वी हैव सिट टुगेदर विद अ होल बंच ऑफ डिजाइनर्स, NID Ahmedabad, I'm sure most of you would know about it, and NISBAD and IIT Delhi Management of Department of Management. So उनके साथ सबके साथ बैठ के जो ये हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है, इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री में गैप है उसके लिए हमने उसको गैप फिल किया है. सो वी हैव taken a step forward than the rest of the world. So the whole world is teaching you just design. We are teaching you what is missing. आप डिजाइन का प्रोग्राम करेंगे और बोलेंगे जी हम फैशन डिजाइनर बन जाएंगे. यस बनेंगे, बट इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, आपको टाइम लगेगा. बट वो टाइम बीच में लगाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, यू विल लर्न एट ICF. We are also members of Fashion Design Council of India, which is also now associated with Lakme Fashion Week. So every fashion show, every event, you will be a part of it. You will get to attend. Faculty, I've already explained how good our faculty members are. Plug and play career, because आप जो कुछ यहाँ सीखोगे, जो हमने वो gaps industry integrated program बनाने के लिए cover किया है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे आप पहले दिन से काम करना शुरू करोगे. यू विल नॉट हैव टू बी ट्रेन्ड अगेन. बहुत सारे लोग होते हैं जो जब जाते हैं नया जॉब शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट सेइंग ओ यू नो आई डोंट नो दिस, सो द होल कंपनी विल स्पेंड टाइम ऑन ट्रेनिंग यू, फिर आप काम करने स्टार्ट करोगे. ऐसा नहीं है. विद ICF यू विल बी रेडी टू वर्क बिफोर यू इवन ज्वाइन. सो play and plug and play, sorry. Then ICF Library and Resource Centers. So we give you a lot of information. We are also a part of WGSN. It's a world forecasting site, which is used by every fashion designer in the world. And it talks to you about how the fashion moves on for the next couple of seasons. So today my students are working on an autumn winter, I mean, we are sitting in autumn winter 2022. They will be working right now at a 22, 23 or 23, 24 already. So they work much ahead. So all designers have to work much ahead of time. And क्योंकि अब हम लोग supposing अभी हमारा विंटर चल रहा है, ठीक है. So अब विंटर प्रोडक्ट स्टोर में आया तो वो आज ही तो बन के नहीं आ सकता है. So we would as designers have to work at least a year before it. So एक साल पहले काम करना शुरू करेंगे, और जब तक आपका सारा लाइन ऑफ प्रोडक्शन, shipments, distributions to all the stores, etc. happens, that is the time it is required. So we designers have to start working at least a year before. And then by the time the season comes in, your product should be ready to be sold. Okay, so that's also so it's a part of your library and resource centers. Resource center would mean कौन सा चीज आपको कहाँ से मिलेगा, कपड़ा कौन सा कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, कपड़ा कैसा होता है. So understanding of every aspects of it. So that's a resource center. Then we have participation in fashion weeks. That means unlike all the other design schools, हमारे ग्रेजुएटिंग शोज नहीं होते हैं. हमारे शोज जितने भी होते हैं, हर सेमेस्टर में एक फैशन वीक है जो कि प्रोफेशनल फैशन वीक्स होते हैं. हमारे स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, which means very recently, last week, we had our students participate in the Couture Runway Week. Before that, it's been Asia Designer Weeks, and you know all the designer weeks that happens. Our students showcase their collections in those. So you have a hands-on experience. Remember the experiential learning. So you will have all these hands-on experiences on how to create a show garment, how to sell a garment, how to manage models, how to manage backstage, how to get photographs clicked, so fashion photography, how to style your garment when it's going, you know, to be shot on the fashion photography shoot, or how it's going to walk on the ramp. So there are different types of stylings that you will have to learn. So this is a very, very important aspect again.
to have an experience on how the world in fashion works. So ये fashion weeks में, apart from other people, apart from the media, you will also have a lot of buyers there, जो कि अगर आपका garment देखते हैं, उनको पसंद आता है, so they can also order. So you start your business while you're in college. So participation in the fashion weeks. Next slide, please, sir. Okay, so now your career path, which I guess everybody is very interested in. So your career paths are going to be, it's going to be a role within a creative service. कोई स्टार्टअप है या आप किसी डिजाइनर के साथ काम कर सकते हैं, सो वहां पे भी आपको आई हैव टू काइंड ऑफ अगेन ब्रेक दैट myth for you guys and burst your bubbles. जब हम डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, हम वेरी कन्वीनियंटली सोच लेते हैं हम फैशन डिजाइनर्स बन गए, करेक्ट? तो हम फैशन डिजाइनर्स नहीं बन जाते हैं, और हम अगर फैशन डिजाइनर बन गए और हमने कहा हम एक असिस्टेंट डिजाइनर का रोल लेंगे, हम एक डिजाइनर के साथ काम करेंगे. सो सपोज आई एम वांट टू वर्क विद सब्यसाची एंड आई से अरे मुझे सब्यसाची के साथ आई बिकम एन असिस्टेंट designer. So do you know what an assistant designer would do? Do you think Sabyasachi needs your designs? No, right? Because his work is known for his designs. So his name is on stake. उसको आपके डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है. उसको आपकी जरूरत है प्रोडक्शन देखने के लिए, उसको आपकी जरूरत है उसके सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, उसको आपकी जरूरत है सैम्पलिंग के लिए, उसके रिटेल स्टोर्स पे जाने के लिए, ओके वहां पे देखने के लिए, कंज्यूमर माइंडसेट देखने के लिए, कंपटीशन स्टडी करने के लिए. सो उसको वो सब चीजें आपके लिए आपको करवानी है. तो आप सिर्फ डिजाइनिंग उसके लिए नहीं करेंगे, सो आपको वो चीजें आनी जरूरी है. सो वंस यू आर वर्किंग within a company, you have to ensure that you are aware of every working position there. If you are working as an assistant designer, if you want a more specialized thing, then it becomes a production manager. So you will ensure कि आपकी merchandising ठीक है, आपके quality ठीक है, आपका production time पे जा रहा है, आपकी costings ठीक जा रही हैं. So that's where a specialization of production manager will become. Or you can also get specialized into retail. So आपका retail outlets क्या होगा, competition क्या कर रहा है, कौन सा product कौन से store पे जाना है. So वो एक study होता है. So retail and how to sell also is very important. Then of course I did tell you about what an assistant fashion designer does. Then pattern masters. Fun fact, pattern masters in any export house, a good pattern master is paid more than the MD of the export house. They are very, very important. They are highly paid. So अगर आपकी proficiency इसमें है, so there is no stopping you, because patterns are the make and the break of a product. So बहुत important है एक pattern master. Then prints and embroidery specialist, you can start your own prints because you'll be learning surface embellishments and surface ornamentation. So आप prints में जा सकते हैं, आप embroidery units खोल सकते हैं. So there are plenty options available for you. Next slide, sir. So again, relevant education and experiential learning is the key to a successful career. Next slide, sir. So you choose wisely. And we are open for any questions that you would like to ask.